Welcome back, dear students. Thank you very much for joining me again into the sequence of the lectures that was related to the CorelDRAW. And in the last lecture, we discussed about free pen tool. We discussed about the pen tool. Pen tool is exactly the same like as we had in Photoshop, almost the same as in Illustrator. So you can just click and then click and then click anywhere, and you can create any sort of thing like this. Right. That's the first thing. Second, you click here and click करने के बाद drag करें, and that is something which you can very easily create different type of angular shapes with the help of pen tool also. Correct. So the most interesting part after this is कि आप ऑटोमेटिकली माउस को जिधर लेकर जाएंगे कर्व खुद ब खुद आपको वो आइडिया बताती जाएगी दैट वेयर इट इज मूविंग. करेक्ट. सो उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज ये आपका एक एंगल से दूसरा एंगल बन गया. नाउ यू हैव टू क्लिक हेयर एंड इसको ड्रैग करना है. सो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन जब हम इसको यूज करते हैं फोटोशॉप में एज कंपेयर टू दिस वन. मींस के इस एंगल से इस एंगल तक और इस एंगल से इस एंगल तक वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ करता है एक एंगल, लेकिन उसके बाद इट वेट्स कि आपने यहाँ से आगे किस एंगल की तरफ मूव करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से जाकर किसी ऐसी जगह पे एक क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद अगले क्लिक को मूव करने के बाद मैं ये एंगल एक बनाने जा रहा हूँ. करेक्ट. मैंने इसको ड्रॉ क्लिक करने के बाद ड्रैग करना शुरू कर दिया एंड ऑटोमेटिकली इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को. समथिंग लाइक दिस. आई होप इट मेक्स सेंस. लेट मी गिव यू अनदर फिगर. मैं जल्दी से जाके इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ एंड लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल हाउ वी कैन do this. Another easier way is to understand what exactly is the shortcut keys which I am using within the pen tool. Here is another option, like for example मैं जो भी की प्रेस करूंगा उसकी की यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी. Like for example, here is something I just clicked a key, that's the left mouse button, and then उसके बाद that's another left mouse button and I'm dragging, means I have not released this, and then उसके बाद if I press right click doesn't means pen tool के अंदर right click का कोई पर्पस नहीं. then I click here and something like again click here. तो जो जो एंगल आप बनाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली वो एंगल बनना शुरू हो जाएगा. then there is another option. let me redo this again to give you further ease. let's suppose I'm going to click here and then उसके बाद with every single click I'm actually dragging this something like this, and then uske baad something like this or to any angle जिस पे भी आप इसको लेकर जाना चाहें. right. so if at any instance at any moment of time if I'm interested to make it further change, first you can add something at any point and you can delete while coming clicking or reaching to any specific node. जैसे ही आप उसके ऊपर आएंगे it will give you the option either you want to delete this and you click here and here it goes. Means there is no point, there is no node in between this that is available. I hope it's clear and it makes sense to you. So how can you simply add the node? Just इस circle में किसी point के ऊपर आकर you just need to press click and here we go. Here is another point that has been added. और इसी तरीके से you can already clicked means added node के ऊपर जैसे ही आप cursor या mouse को लेके आएंगे it will automatically delete that node. राइट. और अगर आप चाहते हैं इसको फर्दर यहां से इसको फर्दर मूव करना, यू जस्ट नीड टू प्रेस द कंट्रोल की एंड क्लिक करें इसके ऊपर और इसके ऊपर. इट विल गिव यू द ऑप्शंस टू फर्दर rotate it, further change it to any angle. For example, let me click here and let me do something like this. So I just press the control key, right, and click here. क्लिक हेयर करने के बाद here you can see that it will give you the option कि आप इस एंगल को चेंज करना चाहते हैं, आप इस एंगल को चेंज करना चाहते हैं, कौन से एंगल को कितने डिग्री पर चेंज करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल क्लिक हेयर and from here you can change the angles of this. Pretty simple.
राइट. सो मैंने कंट्रोल की को पिक किया हुआ है, एंड दैट्स हाउ इन फैक्ट आई एम मूविंग टू एनी डिग्रीज. It's pretty simple. And then uske baad, what you can do is कि you can fill out any of the color inside this, or you can change the any जो कि आने वाले कुछ सेशंस में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. करेक्ट. सो ये है पेन की फर्दर डिटेल्स जिसकी मदद से आप कोई भी शेप इजीली क्रिएट कर सकते हैं. So let's move to the next video, and that is that will explain you the other parts of this freehand tools.